We start with definition of photoelectric effect. Now, what is photoelectric effect? So it is the process of emission of electrons from the surface of a metal when light of suitable frequency above a certain value falls on it. Now, this process is called photoelectric effect. So, when light of certain frequency falls on a metal surface, electrons are emitted from the metal surface, and this effect was observed by first it was observed by Hertz in case of spark gap, and then by various people. So we will discuss this effect for metals only for here. Now here the electrons emitted from the metal surface are called photoelectrons. Okay, so due to photoelectric effect, whatever electrons come out of the metal, they are called photoelectrons. Those are electrons only, but just we call it photoelectrons. Now in that definition itself, here we are saying that light of suitable frequency above a certain value. So can light of any frequency cause photoelectric effect or photoelectric emission? Then no. There is certain minimum frequency above which the frequency of light is required, or from that frequency. This frequency is called the threshold frequency, denoted by that letter is Greek letter nu, and nu and zero, we read it as nu naught, nu zero or nu naught. Okay. So the minimum frequency of incident light or radiation required for photoelectric emission to take place from the given metal surface is called threshold frequency for the metal. Okay. Similarly, we also have threshold wavelength. So the maximum wavelength of incident light or radiation above which photoelectric emission or effect cannot be produced from the given metal surface is called threshold wavelength for the metal. And you can just do this because we are talking about light. We know that the wavelength corresponding to threshold frequency is called threshold wavelength. In vacuum, C is equal to nu naught lambda naught, where C is speed of light in vacuum. We are talking about light here. Okay. So once we know these things, these are the definitions. There is experimental study of photoelectric effect. For this, we do an experiment, and this is what the experiment looks like. This is the diagram. Okay. So this is experimental setup to study photoelectric effect. Now, what are the things here? There is a glass bulb. This bulb is a glass bulb. Okay. Now, in this glass bulb, what you see is left-hand side, extreme left-hand side. There is a photosensitive plate denoted by C. Let's call it C is the emitter plate, or also called cathode. So I'm denoting it by C. This plate is the one that emits the electrons when light of suitable frequency strikes it. Opposite to it, there is another plate called A plate, collector plate, anode plate. Then there is voltage between collector and emitter, or cathode and anode. You can, I'm calling it VCE, which is measured using that voltmeter over there. You can see that voltmeter in the diagram. Okay. IP is the photoelectric current. That is the current measured by microammeter in the circuit that you can see there. S is the source of polychromatic light. Polychromatic, word polychromatic indicates that the light is having all possible frequencies in this case. Okay, monochromatic is with single frequency. Nu is frequency of incident radiation, and I is the intensity of incident radiation or light. So these are the things. Out of these things, photoelectric current is the only thing that we are going to observe. Okay, so photoelectric current is something that we observe. So what happens? This is a commutator key, four-way key, and here you have a quartz window so that all frequencies can enter this bulb, because glass does not allow that. So we want all the way from infrared to ultraviolet, all the light frequencies to enter this bulb. Hence, we are using a quartz window. So the light enters this, hits the metal. Now, at least one of the frequencies which you have is greater than threshold frequency, minimum frequency. Hence, the electrons are emitted.
which then move towards positively charged anode because you are connecting it to the positive terminal of the battery through this rheostat. This is the logic basically. This is what this circuit is. Okay. अभी ये सर्किट को यूज करके हम कुछ काम करते हैं. So here are some observations and graphs. Okay. अभी इसमें आपको, how can I copy this? I don't know, but if I could. Okay, let me tell you what was this, what the things, what are the things here, and how can we fit all those things at its place. A second, I might need to copy this entirely because I can't copy it separately. That is another thing. I'll copy it at once and then I'll tell you what we are doing here. We are trying to find, or we are trying to study this photoelectric effect, doing some experiment using that setup. And what is this experiment? What is our experiment? In our experiment, we are going to change either frequency or intensity or VCE by keeping the one at a time. So if you are changing intensity, you are going to keep frequency and VCE constant, and you are going to observe photoelectric current. Okay, so that is our experiment. Now, when we do this experiment, when we, of course, we'll have to keep on doing this experiment, and after performing the experiment, we get certain results. So what are these results? So those observations are to be plotted here. Let's see. What can we do here? So first, we'll try to find effect of frequency of incident radiation of photoelectric effect, photoelectric current. Now, why frequency only? The reason is, if the frequency of the light becomes less than certain frequency, we know that the photoelectric emission will not take place, and then we'll have to plot graphs. So I'm trying to copy these graphs, which is another odd thing to do. Okay, so मैं draw नहीं कर पाऊंगा एक graph because वो time consuming होगा. So let me just copy those graphs. Okay. So here is our first graph. Now what this graph is all about? This graph shows that as you increase the frequency from 0 to some maximum value, okay, you start increasing the frequency. So frequency is plotted on x-axis, that is our function variable, and photoelectric current is plotted on y-axis, and you start increasing. Of course, the other two things, that is VCE, voltage between collector and emitter, because you are connecting it to a battery, and voltage between emitter and collector, and the other thing is intensity of incident radiation is kept constant. So it is observed that up to a certain point, the frequency, as you increase the frequency from 0 gradually up to a certain frequency, there is no photoelectric current seen, and thereafter when you increase the frequency, the photoelectric current suddenly increases. Okay, so what we conclude from this, the photoelectric emission from the given surface takes place if and only if the frequency of incident radiation is equal to or greater than a certain minimum frequency called the threshold frequency. We denote it by this Greek letter nu and naught. So nu naught is the way we represent it. The threshold frequency is constant. Of course, you will have to perform the experiment by changing. You will have to perform the experiment again by changing the metal, means uska cathode change करके भी आप try करेंगे. And then we have found that the threshold frequency for given metal is constant. Is constant, but it is different for different metals. Also, threshold frequency and threshold wavelengths, they are related like this. This thing is called threshold. Threshold wavelength lambda naught is c upon mu naught, where c is speed of light and mu naught is frequency. So this is what we observe. Now these observations are called Lennard's laws. Okay, वॉन लिनार्ड करके एक साइंटिस्ट था, उसने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो उसने जो ऑब्जर्वेशंस किए, दे आर कॉल्ड Lennard's laws, and these Lennard's laws are written here, 1 2 3 4. These are Lennard's laws and these are observations. Now once we are done with this first thing is the effect of frequency, then we move to the next effect, that is effect of intensity. So now we know what is the effect of frequency, then we can definitely check effect of intensity by doing the same thing. Keep the frequency greater than threshold. Now why to keep it greater than threshold?
because we know that if we don't keep it greater than threshold, there is no current. So we will have to keep it greater than threshold. You make it greater than threshold and then start increasing the intensity of light. Intensity, brightness increase karte jao from 0 to maximum possible value. And it is observed that as you do so, the photoelectric current goes on increasing with increase in photoelectric current goes on. ये linear graph है, right? ये directly proportional वाला graph है. So photoelectric current goes on increasing, so it is directly proportional to intensity provided the frequency is greater than threshold frequency. So if you keep the frequency greater than threshold frequency, then the photoelectric current, if present, will be always directly proportional to the intensity of incident light. So that is what we observe. So photoelectric current is directly proportional to the intensity I of incident radiation. Okay, that is the number of photoelectrons emitted per unit time is directly proportional to the intensity of incident radiation provided nu is greater or equal to nu naught. ठीक है. दूसरा आप चेक करेंगे कि whether it depends on frequency, मतलब फ्रीक्वेंसी साथ में चेंज करो तो ये करंट चेंज होता है क्या? तो नहीं. द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बट इट डिपेंड्स ओनली ऑन intensity of incident radiation provided this frequency nu remains greater or equal to nu naught. So if you are always greater than threshold frequency, then you can always get this relation. Then photoelectric current, ये तो मैंने note लिख दिया है. The photoelectric current is directly proportional to intensity, and photoelectric current is NE by T, where N by T is number of photoelectrons emitted per unit time, and E is magnitude of charge on electron. As you know, किस current को ऐसे measure करते हैं. Therefore, NE by T is proportional to I. Therefore, N by T is proportional to I, where N by T में से E कहा गया, तो E को मैंने constant है इसलिए proportionality use किया, और ये यहाँ पे लिखा है मैंने. That is number of photoelectrons emitted per unit time is directly proportional to intensity of incident light provided nu is greater or equal to threshold. Okay. Now once we are done with these two variables, we'll move to the third variable. अभी हमारा third variable जो था वो voltage है, voltage between emitter and collector. So voltage between emitter and collector, अभी उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो वोल्टेज बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर को आप रिवर्स कर सकते हैं, यानी वोल्टेज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. So what you will do, you will start the experiment by keeping C positive. अभी C मतलब यहाँ पे कलेक्टर है, मैंने कलेक्टर पॉजिटिव लिखा है, तो आपके उसमें C के बदले आपने A लिखा है वहां पे, तो लेट्स राइट A, लेट्स चेंज इट. अभी ये ग्राफ आपको ऐसा प्लॉट करना है, और ये ऐसा कहाँ से आया वो भी बता देता हूँ. लेट्स मेक इट A पॉजिटिव, कलेक्टर के बदले एनोड ए, प्लेट ए पॉजिटिव करना है आपको. ओके, सो इफ यू कीप द कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव एंड सम हायर वैल्यू से 5 वोल्ट 6 वोल्ट पे आप रखो उसे, एंड फ्रॉम देयर यू स्टार्ट डिक्रीजिंग. इंटेंसिटी कांस्टेंट रखना है एंड फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं करना है. देन यू स्टार्ट डिक्रीजिंग द पोटेंशियल, डिक्रीज करते जाओ टुवर्ड्स जीरो. देन रिवर्स द पोलैरिटी, यानी आपने पहले इसको पॉजिटिव रखा था, बाद में उसको नेगेटिव करो, and then you start increasing the potential on left hand side. So you will see that the graph initially remains constant, then there is a slight dip when you come very close to the y-axis, and then the graph rapidly goes down, and for a certain negative potential it becomes zero, and thereafter if you increase the potential it will remain zero. Now this is the graph, this is the behavior of current, photoelectric current with that collector emitter voltage. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? It is basically the phenomenon of attraction between the plate and repulsion between the plate. So when electrons come out of that metal surface, they don't come out of same velocity or same kinetic energy. So they can hit the plate because plates are very close. So even if you don't keep it positive, so most of them will continue to hit it. While if you keep it positive, so they will always hit the plate because they are attracted. And hence, when you come very close to zero potential, there is no potential difference between the two plates, still electrons coming out will hit the plate, hence the current decreases by a very small value, almost negligible value. But when you make the plate negative, collector plate negative, your anode negative, then what happens? The anode starts repelling the electrons. So as it repels the electron, because they are not coming out with constant energy or different values of kinetic energy, some electrons can overcome the repulsion and hit the plate. As you increase the negative potential, there will be finally no electron which can hit the plate by overcoming the repulsion. Hence the graph suddenly goes to zero. अभी इसे आप interpret करेंगे तो we write it like this.
the photoelectric current reduces to zero for a certain minimum potential applied to the collector plate called stopping potential. अभी यहाँ पे minimum लिखा है, वो minimum के बदले I should have written नेगेटिव. वो मिनिमम क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड, राइट में पॉजिटिव है और लेफ्ट में नेगेटिव है, तो मिनिमम पोटेंशियल नेगेटिव होगा यहाँ पे, राइट? So that's why the word minimum. So certain negative potential applied to the collector plate called stopping potential or cutoff potential. Now what is happening at stopping potential? At stopping potential, electrons with maximum kinetic energy are stopped. Hence all the electrons are stopped. क्योंकि कोई भी overcome करके नहीं जा पा रहा है. And thus at stopping potential, maximum kinetic energy is equal to work done by stopping potential. Of course, ये under equilibrium है. Under equilibrium, K max is equal to work done by stopping potential. Now we know that work done by potential is charge into stopping potential. अभी ये electrostatics में से आता है. Charge into potential is work done, which in this case gets converted to change in kinetic energy, which will be maximum kinetic energy to zero किया आपने, इसलिए K max. So K max is equal to E times Vs, and E times Vs is the value of maximum kinetic energy of the electron in case of this particular part of the experiment. Now इसमें एक और डेफिनेशन होता है सैचुरेशन करंट. यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज अ मैक्सिमम करंट, ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है. इससे ज्यादा करंट इस पर्टिकुलर ग्राफ में नहीं है. सो द मैक्सिमम फोटोइलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट फॉर द गिवन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, या जब तक आपने आई को चेंज नहीं किया तब तक ये वैल्यू बढ़ने वाला नहीं है, यानी आप इसके ऊपर नहीं जा सकते. सो दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट. ओके, नेक्स्ट जो फोर्थ है उसमें दो ग्राफ्स कर रहे हैं हम. दो ग्राफ्स क्योंकि उसमें दो पार्ट्स में एक्सपेरिमेंट करना होता है. एक तो हम ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट ही रिपीट करेंगे, बट दिस टाइम विल कीप ऑन चेंजिंग द फ्रीक्वेंसीज. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज विल चेंज द फ्रीक्वेंसीज, और ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट. ओके, बट दिस टाइम विद टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और थ्री डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और n डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. सो आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करते जाएंगे. इसको क्या होगा, so we'll do the experiment with different frequencies now. आप एक फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करो, फिर दूसरे फ्रीक्वेंसी से वही एक्सपेरिमेंट करो, बट इंटेंसिटी चेंज नहीं करना है आपको लाइट का. ओके, तो दिस इंटेंसिटी मस्ट रिमेन कांस्टेंट, जो यहाँ पे कांस्टेंट है, दिस इंटेंसिटी मस्ट रिमेन कांस्टेंट. और अब मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर ए लिखा है, एनोड के लिए ए लिखा है मैंने, सो आई राइट ए. और अब सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे. तो फ्रीक्वेंसी एक आपने रखा न्यू वन विच इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, और फ्रीक्वेंसी न्यू टू लिखा विच इज ग्रेटर देन न्यू वन. सो न्यू वन और न्यू टू. तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, with increase in frequency of incident radiation, the stopping potential has to be made more negative, यानी वो और पीछे की तरफ चला गया. देखो nu2 is greater than nu1, तो आपका vs2 is on left of vs1, is on the left hand side. Okay, that is the magnitude of stopping potential increases with increase in frequency of incident radiation above threshold frequency. तो ये हमें पता है. दूसरा, अगर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट बार बार करते हो with nu1, nu2, nu3, nu4, and if you try to plot graph of this thing, nu1 vs1 कितना आया, vs2 कितना आया, vs3 कितना आया for given nu1, nu2, nu3, then interestingly the graph looks like this. ये magnitude plot किया मैंने, magnitude of stopping potential versus frequency. Then the graph is a straight line starting at nu naught. Nu naught is threshold frequency. So the stopping potential is independent of intensity, but it depends only on frequency of incident light. Okay, और ये जो ग्राफ है ये आपको बताता है कि magnitude goes on increasing. और इस ग्राफ का स्लोप जो है, फिलहाल आप याद रखो कैसे आता है वो बाद में सोचेंगे, बट इस ग्राफ का स्लोप जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस न्यू का, वो h अपॉन e है. क्या है वैल्यू, वो वैल्यू h बाई e है, वेयर h क्या होता है पता है ना, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 4.14375 into 10⁻⁻15 जूल सेकंड पर कूलम, क्योंकि आपने h बाई e किया है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, राइट. सो दिस इज द ग्राफ एंड दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ this graph. Fine, तो ये हमें मिला एक एडिशनल चीज. Then effect of frequency of incident radiation on kinetic energy. तो because we know that कि kinetic energy का relation वो Vs के साथ है, stopping potential के साथ है kinetic energy का relation. Hence, if we try to plot the graph of K max, maximum possible kinetic energy, देखिए सारे electrons same kinetic energy से बाहर नहीं आ रहे. So if we are trying to find out what is the minimum kinetic energy, तो वो 0 होगा.
while मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है E टाइम्स VS, जो आप एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे आप हर एक E टाइम्स VS का ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो वो ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आता है. अगेन यू गेट अ स्ट्रेट लाइन, बट दिस स्ट्रेट लाइन हैज अ डिफरेंट स्लोप देन प्रीवियस स्ट्रेट लाइन. ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन आता है. व्हाट इट टेल्स, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अबाउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. स्ट्रेट लाइन है. The maximum kinetic energy of ejected photoelectron is independent of intensity, but it depends on frequency of incident radiation only. Now, according to Einstein's theory, ये आगे पढ़ना है हमें, but मैं अभी बता देता हूँ. The slope of the graph is h. ये याद रखिए. As far as we are solving MCQ, as far as MCQs are concerned, हमें ये डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए, ठीक है. तो इसका स्लोप कितना होता है h, और ये ऊपर वाले का स्लोप कितना है h by e, ठीक है. और एक लास्ट ऑब्जर्वेशन होता है द फोटो, आप उसको एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक की तरह याद रखो. द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है द मोमेंट लाइट हिट्स द सरफेस, instantaneously at the same time electrons come out almost at the same time. The photoelectric emission takes place from illuminated region of the surface only, यानी वो बाकी कहीं से नहीं होता है, जहां पे लाइट है उसी पार्ट में से photoelectric emission होता है. Now these are the properties या लेनार्ड्स लॉज कहते हैं इसे. एक काम करो, जरा ये ठीक से पढ़ लो, 2 3 4 जो भी है, just go through it and then we can move to the next part, ठीक है. तो जरा पढ़ लेना, 1-2 मिनट स्पेंड करो, read it and then let me know, ठीक है. Next to this, let's make a chart of some quantities and their dependencies. देखो quantities and dependencies क्या होते हैं here. Of course, quantities in photoelectric effect. So in case of photoelectric effect, we can make a chart like this. Say quantity, it depends on and condition. Now depends on के लिए आप intensity, it depends on frequency or intensity. Depends on what. So अभी तक हमने जो स्टडी किया उससे, starting of photoelectric effect, it depends on frequency, it is independent of intensity, but it depends on metal, यानी which metal you are using. And the condition here is frequency must be greater than or equal to threshold frequency, or wavelength of incident radiation must be less or equal to threshold wavelength. Then magnitude of photoelectric current if present. So if it is present, then it is independent of frequency, but it depends on intensity, and it is independent of metal also. It is not dependent on metal, of course. And the condition is, again, ये condition हर जगह पे same है. So frequency must be always greater or equal to threshold frequency. Saturation current. Saturation current is the maximum current for given intensity. So this maximum current for given intensity is independent of frequency. It depends on intensity, but not dependent on metal again, provided the frequency is greater or equal to threshold frequency. Then maximum kinetic energy of ejected photoelectron, I denote it by Kmax. So this Kmax is frequency dependent. It is independent of intensity, but it depends on metal again. And stopping potential, which I denote by E into E times, Vs, not EVS, Vs. So this Vs thing is dependent on frequency, not dependent on intensity, but it depends again on metal. Now, if you are aware of these things and the condition, then you might be able to solve these questions. There are 2 questions ये answer करने की कोशिश करो. Just let me know what is the answer of this question and try to be a little quick, fast. बताइए आंसर क्या होगा इसका? How can I explain this? So if the question says if blue light produces photoelectric emission from metal surface, but orange light cannot, this practically means the frequency of blue is certainly greater or equal to threshold, but the frequency of orange is certainly less than threshold. Okay, so now we have some uncertain region between orange to blue, because if orange is slightly less than threshold, then orange cannot produce photoelectric emission, but anything beyond orange like yellow, green, blue, violet, everything will produce photo emission. Or if blue itself is threshold, then anything below blue frequency wise cannot produce. So that is the uncertain region. But the question says which one of the following can certainly produce. So certainly के लिए it has to be beyond blue. So beyond blue means having frequency greater than blue. So it's violet. Hence correct answer is option D, violet. Okay. Next question. These are of course again basic questions. Next question यहाँ पे आपका. The question is
Try to solve this one. Try to answer this one. So what is our question here? It says, in a certain photoelectric experiment, when light of frequency 1.5 nu naught and intensity I is incident on photoemissive surface, right? A photoelectric current of 20 microampere is observed. Fine, that is fine, right? Then what else is written there? Then it says, now if the frequency is reduced to half and intensity is doubled, then the current will be. Now intensity is doubled, then definitely current should be doubled. But the problem is you are reducing frequency to half. Now frequency आपने half कर दिया, वो frequency कितना था? 1.5 times nu naught था, right? And that 1.5 times nu naught, ये क्या है? What is it? ये क्या है? 1.5 times nu naught is greater than nu naught, right? हाँ, but 1.5 times nu naught का half कर देंगे आप तो 0.75 times nu naught हो जाएगा, which is less than nu naught. So as the frequency goes below nu naught, there won't be any photoelectric emission. ठीक है? So no photoelectric emission, hence no current. Fine. Now let's try to see the next thing. Failure of wave theory of light to explain photoelectric effect. Now light के लिए, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा है पहले, light के लिए wave theory of light करके एक theory है which says light is propagated through space in the form of waves. Okay? और अभी हम उनको बोलते हैं electromagnetic waves. ठीक है, ये आपको शायद पता है. So light propagates through space in the form of electromagnetic waves, and this is the part of theory. There is an entire chapter called wave theory of light in our syllabus, right? So let's discuss this wave theory of light and how it fails to explain this photoelectric effect. तो इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता करनी है. ठीक है, let's see how it works. So the wave theory of light was established in 19th century. ठीक है, at the end of 19th century, and this theory tells us certain thing about light. So what are the things? Let's see one by one. See it one by one. The phenomenon of interference, diffraction and polarization were explained in a natural and satisfactory way by wave theory of light. अभी इसमें एक problem है छोटा सा, क्योंकि there is a chapter called wave theory of light before this chapter and we haven't done that chapter. तो वो आप जरा सा ऐसे ही पढ़ लो, go through कर लो, so you will understand what's going on. ठीक है. Now according to wave theory of light, light is electromagnetic wave consisting of electric and magnetic fields with continuous distribution of energy over the region of space. Okay, जहां से wave propagate हो रहा है. ठीक है. Let's now see this. If this wave picture of light can explain the observations on photoelectric emission given in above section, previous section. तो हम क्या करते हैं? According to this wave theory of light or wave picture जैसे यहाँ पे लिखा है of light, the free electrons at the surface of metal over which the beam of radiation falls absorb the radiant energy continuously because it is continuous form of energy. Okay, the greater intensity of radiation will provide supply greater amount of energy. Okay, and hence आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट होना चाहिए. ओके, अगर आप वो इंग्लिश वही रीड कर रहे हो तो सेम टू सेम रीड कर सकते हैं आप. अदरवाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, एंड मोरओवर intense beam will have definitely more energy. So thus consequently, जैसे यहाँ पे लिखा है, the greater the intensity, the greater should be the energy absorbed by each electron. In this picture, the maximum kinetic energy of electrons on the surface, if then expected to increase with, is then expected to increase with increase in intensity. Definitely, क्योंकि आप ज्यादा intense light का मतलब है आप ज्यादा energy supply कर रहे हो, and आप ज्यादा energy supply कर रहे हो तो surely आपका emitted electron का energy भी बढ़ना चाहिए. ठीक है. Also, no matter what the frequency of radiation is, a sufficiently intense beam of radiation over sufficient time should be able to impart enough energy to the electrons so that they exceed the minimum energy needed to escape from the metal surface. ठीक है. Hence a threshold frequency is not necessary. तो वैसा कुछ frequency condition नहीं होना चाहिए, क्योंकि irrespective of frequency जो भी energy आप supply कर रहे हो, it depends on intensity. But practically ऐसे होता नहीं है, right? Practically क्या होता है वो हमने ऊपर ऑब्जर्व किया है. तो लेट्स कंक्लूड दिस पार्ट नाउ.
These expectations of wave theory directly contradict observations 1, 2 and 3 of the experiment mentioned above. उसका कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि ऊपर आपने ऐसा लिखा है कि ये इंटेंसिटी डिपेंडेंट है ही नहीं, ये स्टार्टिंग पॉइंट इंटेंसिटी डिपेंडेंट है ही नहीं, चाहे तो आप ये चार्ट में देखो, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी, बट आपका जो लॉजिक है वेव थियरी का वो कहता है कि नहीं, उसको तो इंटेंसिटी डिपेंडेंट ही होना चाहिए. ओके, तो दैट डजंट वर्क. एक, ठीक है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया आपका. ठीक है, फर्दर वी शुड नोट दैट in wave picture the absorption of energy by electrons takes place continuously over time, the entire wavefront of radiation. Since a large number of electrons absorb energy, the energy absorbed per electron per unit time turns out to be very small. Explicit calculation estimate that it can take hours for or more for a single electron to pick up sufficient energy to overcome the work function, yani minimum energy required to jump out of that metal and come out of the metal. This conclusion is again against that observation, right? ऑब्जर्वेशन नंबर यहाँ पे, ये ऑब्जर्वेशन नंबर ये सारे ऑब्जर्वेशन जो है आपके, यानी ऑब्जर्वेशन नंबर 6 और ये दो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस वाला. सो इट कैन नॉट बी इंस्टेंटेनियस, एंड एज इट कैन नॉट बी इंस्टेंटेनियस, तो ऐसा आपका थियरी कहता है, मतलब आपका थियोरेटिकल प्रेडिक्शन क्या कहता है कि ये सारा प्रोसेस जो है वो इंस्टेंटेनियस नहीं होना चाहिए. इट शुड टेक इनफ टाइम फॉर दिस थिंग्स टू कम आउट ऑफ दैट मेटल. ये बातें आप कर रहे हैं यहाँ पे. इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. लेट मी मेक इट 1, 2 एंड 3. ऐसे ऊपर पॉइंट्स 1, 2 एंड 3 लिखे, ऑब्जर्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम में ऑब्जर्वेशंस लिखे, और ये 6 है. तो ऐसे तो आप सबके साथ कर सकते हो कैलकुलेशन, सबके साथ दिखा सकते हो कि वो किसी के साथ मैच नहीं होता है. इट डजंट एक्सप्लेन एनीथिंग. तो हमें अभी नया थियरी चाहिए. नाउ दिस थियरी इज कॉल्ड आइंस्टाइन प्लैंक्स लाइट क्वांटम हाइपोथेसिस एट दैट टाइम, और सिंपली क्वांटम थियरी ऑफ लाइट जिसे आप बोलते हैं. ठीक है. Now, in this quantum theory of light, we, instead of assuming that light in the form of continuous wave, we assume that light is propagated through space in the form of discrete packets of energy called photons. So here we introduce the term photons. And what is a photon? A photon is a packet of light energy, or light quantum बोलते हैं उसको. ठीक है. A photon behaves like particle of light. मतलब particle material particle जैसा नहीं है, but वो behaviorally particle जैसा है, ऐसा हम सोचते हैं. ठीक है. Photons travel with speed of light in vacuum. यानी जब फोटोन ट्रैवल करते हैं, आपको जो लाइट मिलता है वो ऐसे ही होता है, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स ओनली. ठीक है. दिस इज द आइडिया. द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0. ओके, यानी रेस्ट मास मतलब क्या? मास मेजर्ड एट रेस्ट. जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप उसको मेजर करना चाहते हो उसमें वो रेस्ट में होना चाहिए. तो आप बोल रहे हो कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, मतलब फोटोन कभी रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा आपका कहने का मतलब है उसका. ठीक है. एनर्जी ऑफ ईच फोटोन in a radiation of frequency nu and wavelength lambda is given by this mathematical form. ये आपने केमिस्ट्री में भी किया होगा. E is equal to hc by lambda, which is h nu. अभी वहां पे वो क्वांटिटीज क्या है आप जानते हैं. where h is what are the quantities? Planck's constant. where h is Planck's constant. और फिर बाकी का Speed of light and wavelength. उसका वैल्यू पता है आपको? where h is Planck's constant और उसका वैल्यू 6.63 into 10 raised to minus 34. तो h is 6.63 into 10 raised to minus 34 जूल सेकेंड, और इसे प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते तो आप लिख सकते हैं. ठीक है. देन 6th पॉइंट यहाँ पे, टू फाइंड मोमेंटम ऑफ फोटोन. अभी ये हम बार बार पढ़ते हैं, 2-3 बार पढ़ते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि थियरी पढ़ रहे हैं तो हम पहले से ही करके रखते हैं इसको. टू फाइंड मोमेंटम ऑफ फोटोन वी नो दैट E is equal to hc by lambda, लाइट क्वांटम हाइपोथेसिस, एंड E is equal to mc square, एनर्जी मास इक्विवेलेंस. तो इसे कंपेयर करना होता है, एंड इफ यू कंपेयर दैट वी गेट मोमेंटम ऑफ फोटोन इन दिस फॉर्म. So the momentum of photon P is equal to mc is equal to h by lambda, which is h upon hc upon E, hence E by c, where c is speed of light in vacuum of course again. ठीक है. Yes, c capital में small c. ठीक है. So this is the way we get this. Now this theory along with the wave theory of light can explain various phenomena exhibited by light, hence considers the dual nature of radiation. तो यहाँ पे आप उसको पार्टिकल की तरह बिहेव करते हुए कंसिडर करते हो, while वेव थियरी में उसे आप वेव की तरह बिहेव करते हुए कंसिडर करते हो. एंड दिस इज
Einstein-Planck's light quantum hypothesis. Now do one thing, please note down these things, especially the formula. Okay, especially the formula, usko note down karo, and then we'll move to the next part. So what Einstein did, he used this hypothesis to explain how photoelectric emission takes place from metal surface. So let's consider this now. This is called Einstein's theory of photoelectric effect and photoelectric equation. So what Einstein assumed now, when a beam of light of frequency nu is incident upon a metal surface, there are inelastic collisions between the photons in the beam and electrons on the surface of metal. Okay, so there are collisions because photon behaves like particle of light. It is a packet of energy, it can collide. So there are inelastic collisions between the two. During collision, a photon can transfer its entire energy to the electron or not at all. Means if it has to transfer, it will transfer entirely or it won't. No energy transfer takes place. Okay? If the photon transfers its entire energy to the electron, then the energy is used in two parts. Now, how it is used in two parts? A part of energy is used to liberate the electron from the given metal surface. We call it threshold work. यानी उसको निकालने के लिए जो work हुआ. While the remaining part of the energy, whatever is left with that electron, because electron has gained the energy, remaining part is expressed as kinetic energy of ejected photoelectron. और बात very simple है, अगर electron का position different है, तो definitely सारे electrons same energy देके बाहर नहीं निकलेंगे. They will have to spend different amounts of energy. Okay. Einstein also added one thing. He defined something called photoelectric work function in his work. Photoelectric work function generally denoted by phi naught. मैं phi naught से denote करता हूँ, कुछ लोग W naught से denote करते हैं, different in different books. The minimum amount of energy of incident photon required to liberate electrons from the given metal surface is called photoelectric work function. यानी कम से कम कितना energy होना चाहिए so that electron बाहर आ जाए. उससे कम energy से वो बाहर नहीं आएगा. And this is called photoelectric work function. इसका ऐसा unit है, energy का unit joule और electron volt. So then Einstein explained it, what happens exactly. If E is equal to h nu is equal to hc by lambda is the energy of incident photon that is transferred to the electron, then according to Einstein's theory, this E is equal to threshold work plus kinetic energy of ejected photoelectron. Barabar? Now if the electron is liberated spending minimum amount of energy that is equal to the work function, then it has maximum kinetic energy. Else the kinetic energy can vary between 0 to k max. तो ये अगर आप समझ सकते हो तो अंडर दिस कंडीशन यू कैन राइट, अंडर ये स्टैटिस्टिकल कंडीशन है, अंडर दिस कंडीशन यू कैन राइट E इज इक्वल टू phi naught प्लस k max. ओके, यानी अगर आपने एग्जैक्टली उतना ही एनर्जी स्पेंड किया जिसको जितना उसको बाहर निकालने के लिए चाहिए, तो बाकी बचा हुआ एनर्जी विल बी एक्सप्रेस्ड एज काइनेटिक एनर्जी, और वो मैक्सिमम होगा क्योंकि मैक्सिमम टोटल एनर्जी E ही है, उसमें से जो मिनिमम चाहिए था वो आपने स्पेंड किया, तो बाकी बचा जो भी होता है वो दिखेगा आपको काइनेटिक एनर्जी की तरह, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की तरह. Also E is equal to h nu from Einstein's theory. So h nu is equal to phi naught plus k max. Now, when the light has frequency equal to the threshold frequency of that metal, the electrons are liberated with zero kinetic energy. यानी electrons are just liberated कहते हैं. Okay. Thus, under this condition, h nu naught, यानी वो threshold frequency आपका h nu naught, तो h nu naught is equal to phi naught plus 0. Hence, h nu naught is equal to hc by lambda naught is equal to phi naught. और इसे आप रीसब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में. So since phi naught is constant, substituting back to equation 1 ऊपर लिखा है मैंने, you substitute it back to equation 1, we get h nu is equal to h nu naught plus k max, and hence you can write k max is equal to h nu minus nu naught, which can be written as hc in bracket 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught. आप यहाँ पे लिख सकते हैं, because ये कहाँ से आया, because lambda और nu जो भी लिखना है आपको, nu is equal to c upon lambda and nu naught is equal to c upon lambda naught. Right, ये हमें पता है, so that's why we get this. ठीक है. The above expression is called Einstein's photoelectric equation. इस expression को क्या बोलते हैं?
Einstein's photoelectric equation, and this is the way you get this. आप इसको देखेंगे ना तो h nu not k max, ये इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये न्यू के ऊपर बेस्ड इक्वेशन है, यानी अभी आपका सब कुछ जो कुछ भी होगा वो न्यू डिपेंडेंट होगा, इसमें इंटेंसिटी नहीं है, ठीक है. सो दिस इज द वे आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम मेटल सरफेस. अभी आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे आपका इक्वेशन जो है ना उसे आप ऐसे याद रखो. यू ट्राई टू रिमेंबर दिस. नोट E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्स आपका इक्वेशन है, मैंने टेबल के फॉर्म में लिखा है. इसमें सब्स्टिट्यूशंस क्या हो सकते हैं, तो E के जगह पे या तो आप लिख सकते हैं एच न्यू या फिर लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा. फाई नॉट के जगह पे लिख सकते हैं एच न्यू नॉट या एच सी बाय लैम्डा नॉट. एंड के मैक्स के जगह पे लिखेंगे आप हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर और E टाइम्स वी एस. अगर आप ये ऐसा याद रख सकते हो तो गिवन थिंग्स के हिसाब से आप उसको चेंज करके लिख सकते हो. विल सॉल्व प्रॉब्लम्स, आई टेल यू हाउ टू सॉल्व. सेकंड थिंग जो हमें याद रखनी है यहाँ पे वो है ये कि 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर. ये शायद आपको पहले से पता होगा, राइट. 1 जूल इज इक्वल टू, ये कन्वर्जन है सारे जो इसमें काम के होते हैं. 1 जूल इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सी का जो वैल्यू है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड है. फिर H का जो वैल्यू है वो मैं दोनों यूनिट्स में लिख के दे रहा हूँ, जूल सेकंड एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड. तो H का वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, या फिर वो होता है 4.144 इंटू 10⁻15. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में लिखा हुआ वैल्यू है, ठीक है. और Hc का वैल्यू भी आप चाहे तो याद रखो. Hc का वैल्यू डायरेक्टली होता है H इंटू सी का 1.989 इंटू 10⁻25 जूल मीटर, या वो होता है 1.2432 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर, ठीक है. Now based on this there are various problems. ये इतना ही एक्चुअल कंटेंट तो इतना ही है, बट बेस्ड ऑन दिस देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स. तो लेट्स टेक, जरा बुकलेट ले लो, बुकलेट 9 है इसका. EVS से वैल्यू नेगेटिव असणार ना. Which one? EVS E times VS. yes. हाँ, बट ये हम मैग्नीट्यूड लेते हैं खाली. यहाँ पे जो कैलकुलेशन करते हैं इट इज ओनली डन विद द मैग्नीट्यूड. ओके, एक्चुअल वैल्यू ऑफ VS इज नेगेटिव, बट हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है. क्योंकि वो ग्राफ भी हमने ऐसे बनाया है. यहाँ पे देखो, एक्चुअली ये जो ग्राफ है ना इसका वो इक्वेशन है. ये जो ग्राफ है ना आपने ये बनाया, ये ग्राफ का वो इक्वेशन है. ये के मैक्स y इज इक्वल टू mx माइनस सी. ये y इज इक्वल टू mx माइनस सी का ग्राफ है. ओके, तो दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ ओनली. एंड फॉर्मेट कौन सा है, मतलब टाइप y इज इक्वल टू mx माइनस सी. तो ये इसे अगर आप नीचे खींचोगे तो जहां पे वो y एक्सिस को कट करेगा, दैट पॉइंट विल इंडिकेट फाई नॉट का वैल्यू, ठीक है. Alright, so let's try to solve a few problems. We can start with certain problems. यहाँ पे एक मिनट है, मुझे जरा problems एक सेकंड देखने दो. कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो देखने दो. हाँ, सो बुकलेट 9 ले लीजिए जरा. बुकलेट 9 पेज नंबर 295, एक्सरसाइज लेवल 1 का प्रॉब्लम नंबर बता देता हूँ आपको कौन सा है. यहाँ पे तो प्रॉब्लम मैंने कॉपी करके रखा है, तो प्रॉब्लम ही कॉपी कर लेता हूँ मैं डायरेक्टली. ये सॉल्व करो, चलो स्टार्ट सॉल्विंग दिस. The momentum of photon in X-ray beam of 10⁻⁻10 meter wavelength is. Can you solve that? Start solving. So how to solve this? This one is easy. Direct momentum पूछा है. So the momentum of photon is P is equal to h by lambda, right? So directly values डाल दो. H का value 6.63 into 10⁻34 and lambda का value उधर given है, which is 10⁻⁻10 मीटर. तो वैसे ही डाल दो डायरेक्टली वैल्यू and you can get that answer, right? So your answer will be option B. Option B. चलो solve problem number 10. First of all, let's see what is the question. The question is, a radio transmitter operates at frequency 880 kilohertz and power 10 kilowatt. The number of photons emitted per second. So what we'll do, power is energy radiated per unit time, right? So that is number of photons radiated per unit time into energy of each photon. So therefore you can calculate n by t, that is number of
photons per unit time as power upon energy. So n by t का वैल्यू कैलकुलेट करो तो approximately this results in approximately 1.7 into 10 raised to 31. अभी अपने इसमें बुकलेट में ऑप्शन है 1.72 into 10 raised to 31. That is option A, right? Very good. Question number 11 solve करो. Question number 11. It reads a photon of wavelength 4400 angstrom unit is passing through vacuum. The effective mass and momentum of the photon are respectively. So what do we do? We know that momentum of photon is yes 1 किलोवॅट होतं ना. okay. आधी क्वेश्चन मध्ये 1 किलोवॅट. Yes. Next question we have for photon P is equal to h by lambda as we know it. So then P is equal to h by lambda का वैल्यू डाल ही दो तो it is P is 1.7 into 10 raised to minus 27 kg meter per second. ये एक तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. एंड दूसरा मास के लिए आप क्या करोगे? Since P is equal to m into c, right? Since P is equal to m into c, ऐसे करो ना. Now since P is equal to m into c, right? फिर m is equal to p upon c और फिर सब्स्टिट्यूट कर लो. p का वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर लिया डिवाइडेड बाय c, तो आपको उसका फोटोन का रिलेटिविस्टिक मास मिल जाएगा. यानी मूविंग फोटोन का इफेक्टिव मास कितना है? तो वो इतना है 1.5 into 10 raised to minus 27 upon 3 into 10 raised to 8 in this problem, which is 5 into 10 raised to minus 36 kg. और अभी ये ऑप्शन में कहाँ पे दिखा आपको? जीरो मत लिखना, जीरो रेस्ट मास होता है, ये मूविंग फोटोन का मास है. रेस्ट पे तो जीरो होता है, वो अलग बात है. ठीक है. Okay. Now let's come to next page. Problem number जरा देखो कौन सा है. Problem number 23 देखो. Page number 296. Problem number 23. Booklet 8 है, booklet 9 नहीं है. Sorry. So what is that problem? Read it. Problem तो मैंने यहाँ पे रख दिया है. Page number 296. Problem number 8. Problem number 23. Sorry. Yes. Try to solve. It says a laser used to weld detached and emits light with wavelength 652 nanometer. Nano is 10 raised to minus 9 in pulses that are 20 millisecond duration. That are of 20 millisecond duration. The average power during each pulse is 0.6 watt. The energy in each pulse and in a single photon are. Can we calculate that? So what are the given things? तो ये तीन चीजें हमारे पास तो गिवन है, डायरेक्ट प्रॉब्लम में गिवन है. लैम्डा इज 652 नैनोमीटर, टी इज 20 मिलीसेकंड, राइट? एंड पल्स का पावर लिखा है, तो पावर ऑफ पल्स इज 0.6 वॉट. सॉल्यूशन हमें पता है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, करेक्ट? ये हमें पता है पहले से. तो E का वैल्यू तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग स्ट्रेट अवे. नंबर सब्स्टिट्यूशन करके आंसर मिल जाएगा आपको. ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा एफर्ट्स का काम होता है क्योंकि नंबर्स थोड़े से वियर्ड होते हैं कैलकुलेट करने के लिए, स्लाइटली ऑड. तो जरा देखो, इधर उधर करके कैलकुलेशन हो जाएगा आपका. ठीक है, करेक्ट. तो माय आंसर इज 1.9. आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम इन दैट ऑफ कोर्स. नाउ एनर्जी इन ईच पल्स हमें कैलकुलेट करना है. तो एनर्जी इन ईच पल्स हमें कैसे कैलकुलेट करना है? तो ईच पल्स का एनर्जी इज पावर इन ईच पल्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम. So energy in each pulse will be power in each pulse multiplied by time. तो वो कर लो कैलकुलेट. So that is E pulse is equal to P pulse into time. और फिर वो भी कैलकुलेशन तो वही है, सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन करो एंड कैलकुलेट. सो वो 7.5 into 10 raised to 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा. ठीक है. Now we'll have to solve more problems of this. So what I want you to do is, आप ये इसका लेवल 1 का एटलीस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला प्रॉब्लम्स पहले ट्राई करो, ग्राफ्स वगैरह. नेक्स्ट लेक्चर में we'll discuss those problems first, okay? And after discussion of problems we'll come move to the next part, that is